Hello. So, hello everyone. I'm Sudipta welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. So, tell me, how are you guys? How are you, my dear students? How are you? Kemon achen? Ma'am, please, I'm Simran ma'am kahidele. So, hello everyone. I'm Simran welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. Gayatri, happy? କିଛି ବି ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଜିବ ଗଜିବ ଡିମାଣ୍ଡ କୋଡ୍ ଆସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ପଶେ କେମିତି ଏମିତି ଆମେ ମ୍ୟାମକୁ କହିବୁ ମ୍ୟାମ ଆମ କଥା ମାନିବେ ଠିକ ଲେଖ ମୁଁ ତମ କଥା ମାନୁଛି ତମମାନଙ୍କର କି ଯାଦୁ ଭାବ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଯାଦୁ ତମର ହେଇଯାଇଛି ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ everyone। ଓହୋ ଗାୟତ୍ରୀ ନାଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ 10-15 ଥର ନ ନେଲେ ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି କ୍ଲାସଟା ଗୋଟେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ପୁରା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଗୁଛି ଓକେ अच्छा हेलो मैम कौन एखरे तुम से जिनस बुझेनी तो नल तुम एटा कुहनी मो क्लास रे से कोडटा तुम रखी था स्पेशल फॉर केडीएस सर ओके so we'll start the class audio video clear starting ru कहि दियो audio video clear or not then we will start okay good evening very good evening guys class को entry कर लाइक फाइक टिके मारो लाइक फाइक टिके मारो क्लास तो 5 है नहीं 2 मिनट वेट करो मु टिके शेयर भी कर दिए शेयर भी करनी डन चलो सब क्लियर काचो स्टार्ट करिबा ऑल क्लियर सतीश भाई यस विवेक भल अच्छे आपण मानक क्लास लाइक मूड फुड टिके खराब थाए बट आपण मानक क्लास कला परे मूडटा भल होई से जदि मूड खराब लगी क्लास कैंसिल करली से मूडटा आहुरी खराब होई से जदि लगी मूड खराब अछि माने डेफिनेटली क्लास करे जानजो ना नहीं गोटे ब्लैक कॉफी देन आपण मानकर क्लास दैट्स इनफ सो आपण मानकर आजिर क्लास रहुची कोन ना अबाउट द क्लाइमेट so climate and soils of Odisha आज कंप्लीट कर हैला यस एमिति कथा हैला गुड इवनिंग अमित तो आपण माने जानि चंती ऑलरेडी जानि चंती को टाइम रा क्लास टाइमिंग केते रहउची ना स्टार्टिंग होची 7 am करंट अफेयर्स विथ कुमार दिग्विजय सतपथी सर ओके आफ्टर दैट 10 am ओडिया एंड जीके आपण मानकर अल्टरनेटिव डे रे रहउची चंदन सांकर then 12 pm रे मैथ and reasoning जोगेश सांकर then 1 pm रे कंप्यूटर विकी सांकर 7 pm जनरल साइंस एंड जीके बहुत जल्दी आपण मानकर 7 pm रे स्टार्ट होबाकू जाउची दैट इज जनरल साइंस एंड सिस्टम हमर सॉरी द फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ दैट स्टैटिक पार्ट को आपण मानकर किए ना आपनकर चंदन सर कवर अप करिवे एंड आपनकर 8 रे रहउची कोन ना इंग्लिश विथ पिंकू सर एंड 9 pm रे जस्ट करिके आसीचो केडी सांकर क्लास एंड 10 pm रे आपनकर फेवरेट के सुदीप्ता मैम क्लास नउचंती राइट
गोटे पिला भयंकर गाली सुनिया मोठ आ किछि नाही. So this is the today's quote for you that mistakes are proof that you are trying. जो माने भी क्लास रे प्रेजेंट रहउचंती एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास रे डरी की कमेंट करू नाहंती कि मोर ऑप्शंस मोर आंसर भूल हे जीवो एंड एटा समस्तिंकर आई कैचिंग हे जीवो. सो लाइक डोंट डू दैट आंसर दियंतु एंड गाइस आपण मानकर भूल हो एटा ही तो प्रूफ कि आपण माने पुणी से भूल सिखी की पुणी थरे ठीक कर राइट. सो लाइफ रे केते बेले भी भूल करूचंती बार बार भूल होची सेटा भाबी कि आपण माने स्टॉप करिवेनी आपनकर प्रिपरेशन आपनकर सिलेक्शन होउनी ता पाई भी आपण माने प्रिपरेशन को स्टॉप करिवे नाही. गोटे पॉइंट आसीबो जते बेले कि आपण मानकर सिलेक्शन हे जीवो एंड से पॉइंटटा बहुत सारा भूल पॉइंट क्रॉस कला परे ठीक पॉइंटटा आसीबो. सो वेट फॉर द राइट टाइम. क्लियर. चलो द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हरी अप आज रा क्वेश्चन बेसी नहीं 50 टा क्वेश्चन हैला डरिबनी कि मैम आज 100 टा क्वेश्चन धरि आछन ना गाइस. क्लाइमेट ऑफ ओडिशा दीटा सेक्शन कर देजी 50 50 2 डेज रा आपनकर क्लाइमेट ऑफ ओडिशा कंप्लीट. क्लियर. चलो तो मते को ओडिशा हैज प्रणाम प्रणाम प्रणाम. चलो क्लास स्टार्ट करबे करा. सो ओडिशा लाइक कलर ना नहीं मुझे देखे त मानकर लाइक कलर ना नहीं मु देखे नले क्लास रे पॉज कर देबी. केते पिला अच्छा प्रेजेंट ना मैम मैंने 120 पिला अच्छु क्लास रे प्रेजेंट किंतु आपन को लाइक करी छु ओनली 42 टा. कोन होछ त मान कर कोन होची को दुख रे लाइक करू ना मु एते खराब त मैं लाइक भी करबानी. चला सो को ओडिशा हैज व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट. सो ओडिशा आसिला माने क्लाइमेट आसिला माने आपन माने कोन मारिबे ना द वन ओनली ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट सॉरी क्लाइमेट. ओके यदि फॉरेस्ट पचरी देला ना ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मन रहबाती की tropical monsoon hela the climate but what's about the forest na this is the tropical moist deciduous forest. Clear. So hame koi pariba ki odisha lies in the tropical belt and in dominated by the southwest monsoon. कोडी southwest monsoon द्वारा ये dominate हेगी थाए. हमर monsoon केबे आसे ना जून नु सितंबर भितरे मैम ओडिशा को आसे and with हमें कहि परिबा hot like not only monsoon with the hot summers कहि परिबा very जोटा कि हमर summers हला winter से हमर कोन very humidity थाए monsoon time रे humidity थाए because of what because of the coastal areas and हमें कहि परिबा the seasonal rainfall भी हुए here because of the seasonal rainfall the humidity the summer everything ताकू नै कि हमें कोन कहते this is the tropical moist sorry tropical monsoon climate. Clear. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किछि एमिति रखि छि जोटा कि क्वेश्चन सुदा आपनकर किछिटा इनिशियली 10-15 एक्सप्लेनेशन एई टाइप रे अछि जोटा कि ताकू रिलेट करि करि आपन सब एक्सप्लेनेशन को देखि पारिबे. क्लियर. फर्स्ट किछटा कहि दोछि देखि दियो. फर्स्ट अपन देखिबे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कोन आसीबो ना मैम टाइप्स ऑफ क्लाइमेट को हमें केते डिवाइड करछु ना मैम 6 टाइप रे डिवाइड करछु. वन इज द ट्रॉपिकल देन ड्राई देन टेम्परेट देन कोल्ड देन पोलर देन हाईलैंड. ट्रॉपिकल कहले कोन कहछि ना हॉट all year जदी माने whole year हमें जो देखिबा hot आसी गला ताको हमें कहछे ट्रॉपिकल. हमर कोन अछि ना मैम ट्रॉपिकल monsoon not only hot monsoon भी एथिरे एडेड हेई की अछि. Clear. So this is the hot all year that with rainy season that means हमर hot whole year either hot रहइबो नहले rainy आसीबो that means आपनकर कोन winter is just equal to negligible. Then हमें कोन तो ड्राई कोन कहछे ना little amount रो रेन रहइबो जेटा कि हमें desert area को कहउचे और ताकू स्टेप बोली हमें कहउचे. देन अपन टेम्परेट आसीबो दैट इज द माइल्ड एंड वार्म समर्स कोल्ड विंटर्स सी के हमें ताकू टेम्परेट रीजन बोली कहउचे. द क्लाइमेटिक कंडीशन इज द टेम्परेट जो दे मिक्स होकी रहउची. देन आसीबो कोल्ड दैट इज द लॉन्ग कोल्ड विंटर्स दैट इज द कॉन्टिनेंटल रीजन रे अपन बेसिकली आसे. देन कोन तो पोलर कोन ना जेते तुंद्रा एरिया रहिला हमें ताकू पोलर रीजन बोली कहउचे. दैट इज द आइस स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर snowfall हुए most of the year हमें कहउची जेते कोन नॉर्दर्न रीजन को जिबा ताकू अपन माने का से ना पोलर से रिलेट करबे. हाईलैंड कहले कोन बुझिबो ना मैम डिपेंड्स ऑन द अल्टीट्यूड दैट मींस हिमाचल कथा कुआ से माने हमर पोलर रीजन रे जिबे ता सहित अपन कोन ना हाईलैंड रे जिबे तांकर घर उडा केमिति हमर माउंटेन रे सब रहसंती घर माने कोन माउंटेन को काटी काटी से मानकर सब देखि दियो बंगलो फंगलो पूरा मस्त की बनेचंती विला गुडा. ओके then also this is the overall हमर कोन वर्ल्ड बेसिस रे हमें देखुचे this is the climatic types. then मते कुह इंडिया रे कोन आसुची ना इंडिया रे मेनलैंड रहउची द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. जदी इंडिया रे पचारुची जेमिति कि आपण माने ओडिसा रे जानसंती ट्रॉपिकल मॉनसून सेमिति इंडिया रे रहउची कोन ना मैम ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट दैट इज द समर मॉनसून रेन.
कोन ना मैं जानि तीनटा सीजन आमे मोस्टली एक्सपीरियंस करूछे इंडिया रे व्हाट आर दैट ना मैम ट्रॉपिकल रहूची monsoon sorry the summer रहूची monsoon रहूची and rain रहूची for sure then आसुची कोन the variation across india हमर कोन रहूची ना मैम desert and dry जानिछंती राजस्थान and गुजरात को नै के हम कहूची कोन that is the desertic तार क्लाइमेट कोन रहिबो ना मैम desert and dry climate रहिबो humid subtropical का हम कहूचे ना मैम north and northern eastern plain को हम रिलेट करी कहूचे then को tropical savanna एटा भी क्वेश्चन आपन को वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन tropical savanna ऊपर रिलेट करिवो that is the wet and the dry condition को कहूची ओटा के much of the peninsular and the interior part of the india को हमें कोन कंसीडर करूचे that is about the savanna then को highland कोड कोन कोन कहूचे ना मैम हिमालयस को highland आसी गला माने आपन माने कोन हिमाद्री हिमाचल that is the old fold mountain का सहित रिलेट करी देते क्लियर पिहु बहुत दिन परे then को मते ओडिसा रा क्लाइमेट कोन होची दिस इज इंपोर्टेंट as we are preparing for the Odisha government so मते को ओडिसा रा कोन होची ना मैम ट्रॉपिकल मानसून that is ए जो टोटल टाइप रा मानसून रहउची टोटल टाइप रा क्लाइमेट रहउची गाइस एटा तो कोन थ्योरी को लॉ अकॉर्डिंग हम बुझिबा एटा भी क्वेश्चन से आसीबो कि जो क्लाइमेट कंडीशन रहउची इंडिया रा हला ओडिसा रा हला एटा डिफरेंशिएट हेची ए जो डिवीजन ता की करछि ना मैम अकॉर्डिंग टू द कोपेन so Copen law according हमारा climatic division हेची total world no matter कि ओडिसा रा इंडिया रा नहीं world रा climatic division के करि संती ना मैम Copen clear फास्ट एक्सप्लेन करूची अरे यार कितने फास्ट तो बहुत ही स्लो करिस तथा फास्ट कहउछ और स्लो कर दोची सो मते को ओडिसा कथा कहले दैट समर स्टार्ट्स मार्च रु दैट इज वेस्ट can heat 40 to 46 degree western odisha जदी हाईएस्ट हमें कहबा ना हमर कोन एक्सपीरियंस करूची हीट कोठी ना मैम वेस्टर्न ओडिसा सहित रिलेट करूचे सो वेस्टर्न ओडिसा पार्ट हमर केते ना 40 to 46 डिग्री 40 to 46 डिग्री गाइस आपण मानकर को एक्सपीरियंस करूचंदी सेल्सियस देन जोटा कि समर रे रहूची हाई देन को रेंज फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून आसुची जस्ट बिकॉज़ कोन हमें कहूचे ना बे ऑफ बंगाल पई आसुची तापरी भी क्वेश्चंस अछि करिबा then को जुलाई रे हमें कहूचे that is the wettest month of the whole the year हमें कहा को कहूचे ना मैम जुलाई को कहूचे ओडिसा विषय then को winters are dry and mild that is the coldest क्या को हमें कंसीडर करछे ओडिसा रे पार्ट जेंदी coldest हमें कोन इंडिया रा नॉर्दर्न पार्ट को करछे सेमिति ओडिसा रे कहा को करछे ना मैम कोरापुट एंड कंधमाल को करछे मन रहइबो एति की पॉइंट मन रहइबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को Odisha's climate is strongly influenced by its proximity to क्लाइमेट ऊपर बेसिक आइडिया आसी गला तो चलो नेक्स्ट मते कुह नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुह ओडिसा's climate is strongly influenced by its proximity to Himalayas बे ऑफ बंगाल सी और वेस्टर्न घाट देखो ओडिसा सहित हम कनेक्ट का करछे ना मैम ईस्टर्न घाट करूछे किंतु वेस्टर्न घाट तो करूने करूछे कि नो मैम सो मते को हिमालय सहित रिलेटेबल अछि कि तो टोटल नॉर्दर्न साइड को पड़ेला रहिला कि सी एंड बे ऑफ बंगाल सो सी माने कोन हमर तो बे ऑफ बंगाल है ना रहिबा कोटा मैम बे ऑफ बंगाल व्हाई टेल मी व्हाई yes guys so बे ऑफ बंगाल रहिबो और आइदर अपन को बे ऑफ बंगाल देखि ऑप्शन रहिबो नले सी रहिबो ता भीतर जोटा के गोटे रहिबो सो हम कहि परिबा मोर प्रिसाइजली द बे ऑफ बंगाल जोटा कि गोटे सी एंड हमर बे ऑफ बंगाल भाबे हम कंसीडर करूचे दैट इज द मोएस्ट advection रहउची from the adjoining sea drives humidity कि humidity को हम पाखु को आणुची कि ओडिसा को आणुची कि स्टार्टिंग करूची कि ना just because we are having the Bay of Bengal to our eastern side clear so Himalayas को हम रिलेट करिबा नाही जत्ते भी साइक्लोजेनेसिस अछि ताको हम जत्ते भी साइक्लोन आसुची ओडिसा को just because of the Bay of Bengal right so ता सहित आपण माने रिलेट करि पारबे clear very good चलो नेक्स्ट सो गाइस रीजन कोथि पय अछि मते को जोटा कि हमरो कोन अछि ना मैम हमर जो क्लाइमेट आसुची स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होची कोथि पय ना बे ऑफ बंगाल बट तार रीजन तार मेन रीजन कोन अछि ना मैम बिकॉज़ ऑफ बे ऑफ बंगाल इज ओडिसा नियरेस्ट एंड वार्म वाटर सोर्स and it controls the state's rain winds and humidity so total हम ओडिसा रा rain हला humidity हला everything guys कहा ऊपर डिपेंड करूची ना मैम बे ऑफ बंगाल ऊपर ही डिपेंड करूची एंड मते को दिस इज द मॉइस्चर सप्लाई फॉर द मानसून यस और नो हमारा मानसून सीजन रे मॉइस्चर सप्लाई करूची कहा को ना ओडिसा को टोटली हमें डिपेंडेंट कहा ऊपर ना बे ऑफ बंगाल ऊपर डिपेंडेंट दैट्स व्हाई वी कैन से दैट the bay
heats off, then कौन हुए ना evaporation हुए, then कौन हुए ना the Bay of Bengal branch of the southwestern monsoon hits the Odisha fast on the east coast रे हमारा southwest monsoon fast hit करे कोठी की ना ओडिशा रो coastal area को fast hit करे, right? After that हम कह परिबा cyclone form in the Bay of Bengal, sorry, that is the bringing the heavy zone, that is सेप्टेम्बर हमर कोन हेवी रेन आसी जाए, जून नु सेप्टेम्बर जाए रेनी सीजन हमर आसे, आफ्टर दैट हमर कोन ना मॉनसून आसी जाए, सॉरी आफ्टर दैट हम कहबे विंटर आसी जाए, तो कोल्ड कंट्रीज आसी जाए. सो जुलाई यूजुअली वेटेस्ट आसी जाए, देन हम कहबा द साइक्लोन्स एंड द डिप्रेशन जहां भी हमर आसुची हाई ह्यूमिडिटी नियर द कोस्टल एरियाज, टेम्परेचर मॉडरेशंस एट द कोस्टल एरियाज, द रेनफॉल ग्रेडियंट, ए सब हमर होजी कोथि पई ना जस्ट बिकॉज़ वी आर हैविंग द बे ऑफ बंगाल इन आवर ईस्टर्न साइड. Is that clear? Got me? चलो मैम साउंड टिके प्रॉब्लम होची, अच्छा हो काली ठीक कर दबा हैला. चलो नेक्स्ट मते को द ओडिशा द समर सीजन बिगिंस इन, ओडिशा रे हमर खरा दिन स्टार्ट केबे होची रे, ओडिशा रे समर सीजन स्टार्ट केबे होची मते कहिलो. ऑब्वियसली Pihu self-study divided by time set. Okay guys, so tell me. Yes, so ठीक है स्पीड अप करा, एक्सप्लेनेशन रखी जाइछि नेक्स्ट पेज रे गाइस, ताकि ठीक देखि त माने जीवो मो एक्सप्लेनेशन ऑप्शन वाइज तमन को कर दोछि. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. तो हमें कहा टू रिलेट करू छे ना मैम, ऑब्वियसली मार्च में करू छे, फेब्रुअरी कर दबनी, फेब्रुअरी एंड माने फेब्रुअरी एंड जाय हमर इवन मार्च रे फर्स्ट वीक जाय भी हमर फटरे कोन ना मैम विंटर रहूची. सो आइसोलेशन स्पाइक्स हमें करि परिबा, द लैंड हीट फास्ट करूची केबे ना फास्ट हीट करूची मार्च रे, ता सहित हमें रिलेट करि परिबा. क्लियर? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट मते को एठी गाइस अछि द माने कर व्हाई द समर हैपन, काहे की एसे समर एंड इंडिया एंड ओडिसा रे कॉन्टेक्स्ट रे कोन अछि गाइस टिके को देखि दो प्लीज. ओके चलो नेक्स्ट मते को मैक्सिमम टेम्परेचर इन वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स ड्यूरिंग समर कैन रीच, वेस्टर्न ओडिशा रे मैक्सिमम टेम्परेचर मते कहिलो आपरे जिए पहुंचो कौन गोचो सोमालिन. हाँ मैक्सिमम टेम्परेचर इन वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग समर कैन रीच. अच्छा ड्यूरिंग समर हमर वेस्टर्न ओडिशा रे केते टेम्परेचर हाईएस्ट हो जाय कहलो, दैट इज द 40 to 46 डिग्री सेल्सियस. केते ना 40 to 46 डिग्री आसुची. आमे जति कहबा 30 to 35 दैट इज वेरी इंटीरियर बेसिन रे आमा आसी जाय, बलांगीर हेला, टिटलागढ़ हेला, कहि पारे सॉरी बलांगीर एंड टिटलागढ़ रे हमर तो 40 to 46 सॉरी फॉर दैट 40 to 46 हमर बलांगीर एंड टिटलागढ़ रे आसी जाय, बहुत 45 डिग्री भी अधिक हमर प्राय टाइम आसी जाय. 30 to 35 तो बहुत स्लो हमर नॉर्मल एमदी ढेंकानाल रे तो एमिदरे 40 हे जाउछ काई कहबा, बट ऑन एंड एवरेज गोटे निया जायछि एनुअली दैट इज द 40 to 46. एमिति नाही 46 को केबे क्रॉस करनी, 48 पर्यंत भी जायछि. तो वेस्टर्न ओडिशा दैट मींस द संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, सोनपुर, बेल्ट एइरे कोन पे ना हिट्स करो 40 to 46 डिग्री एवरेज मे एंड जून रे, mainly because of what? Now the far from the sea, that's the main reason. Why? Now because of these districts are very far away from the sea. Clear? Then we come to that is the hot, dry, wasteless. That's why. Then compare this is the high sun plus clear skies रहुची. That's why हमर कोन अधिक हीट आसुची. जदी वेदरी कंडीशन रहइबो, क्लाउडी एटमॉस्फियर रहइबो, क्लाउडी स्काइज रहइबो, देन कोन से मिसाई टाइप राम पाखु कोन सन आसी परिबो कि सनराइज एक्सपेरियो नो मैम सनराइज तो ब्लॉक होइसिबो. So this is the also main reason. And guys low soil moisture, soil moisture जदी कम रहिबो ताहाले भी होई परिबो, कारण soil जदी से कोन पूरा टाणीबो कोन हमर मॉइस्चर जते बेले टाणी कि नबो, इवापोरेशन बहुत फास्ट होबो, सेते बेले भी कोन टिके टिके क्लाइमेट हमर ठंडा रहिबो. बट जदी सॉइल में मॉइस्चर ही रहबोनी देन हमर कोन होबो, ऑब्वियसली हमर टेंपरेचर हाई ही होबो. Then there is the river rain shadow influence of the eastern ghat ro big shadow आसी जाउची. That's why हमें कहि परिबा that is the interior stay drier than the coastal areas, reinforcing heat build up. Clear? चलो नेक्स्ट मते को नेक्स्ट को the wettest month in Odisha is. तमने कहतले मैम थ्योरी हमको दरकार, थ्योरी कहले तमने कोडे गाइड हो जाओ, क्लास रो केही जीव नाही, क्लास रे प्रेजेंट हुआ, तमने को थ्योरी दरकार छला, सो मु तमने को एक्सप्लेनेशन आंची, बट तमने को मूड ने एक्सप्लेनेशन देखिया पे. सो व्हाट कैन वी लाइक डू? हां चलो तो को द वेटेस्ट मंथ इन ओडिशा इज, ओडिशा रे वेटेस्ट मंथ हमें कहा को कहू, ऑब्वियसली तमने को आगु हम कहि सारी छी. वेटेस्ट मंथ आसिले हमें कहा को चूज करिबा ना मैम चुनाई को कोन द मंथ जस्ट गला ना,
तो जुलाई को चेक करिया बट एबे टिके चेंज हो जाय सितंबर रे बहुत वर्षिला हां कोन लाइक अगस्त रे बहुत वर्षिला ना कि वेरी गुड सो गोटा का पाई कहबनी दिस इज हाई बट ऑफन स्लाइटली भी हुए बिलो द जून और जुलाई ओके चलो नेक्स्ट तो कहीं हुए रेनफॉल कहीं हुए the rainfall जो हमारा हुए the rain कहीं हुए this is the reason evaporation then आपनकर condensation method then convection cyclonic everything guys एटा को टोटल thoroughly पढिबो this is very helpful गोटे थरा करे त मानकर concept clear हे जिवो mark my word next मते कुआ ओडिशा receives rainfall mainly from ओडिशा receive करूची rainfall okay आजिकली रेन पूरा जबरदस्त है तमाने चाहूथिलो इंद्र पूरा खुशी है तमाने को ऊपर चलो सो ओडिशा रिसीव्स रेनफॉल mainly मते कुहा from which month to which month very good that is from केते कहूचे yes guys that is the southwest monsoon option B that is southwest monsoon सहित रिलेट करछे account for approximately 75 to 80% annual rain केते ना 75 to 80% annual rain को से कोन ना टारगेट करूची दैट इज द साउथ वेस्ट monsoon ओडिशा कथा पर जो कॉर्नर रे हमर अछि सेटा कोन होची ना मैम दैट इज द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ एंड हमर ओडिशा कोठ होची एटा कोन होची ऑब्वियसली साउथ वेस्ट monsoon आसी जी सॉरी एपटे सॉरी monsoon टा हमर केमिति आसुची ना ए पट जाउची देन बे ऑफ बंगाल सहित क्रॉस होके पटकु पुणी फ्लो करूची so this is because of the southwest monsoon next mate kya the coastal Odisha has approximately 5% of relative humidity during the monsoon mate kya humidity कोठु आसुची मैं मु साउथ वेस्ट कहूची किंतु ऑप्शन सी मारुची ये केवल तमरो काई होची जे कहला तमरो लाइक बॉडी प्रेजेंट एंड माइंड एब्सेंट केवल सेति पई होची मनटा हमर अलगा कोठी अछि हैला तेनु तांको भी कुआ जोठी मनटा अछि श्रिया तांको भी कुआ क्लास करंतु सो दैट मनटा ठीक जगह रे क्लास रे ही रहिबो दि जन को मन अलगा अलगा जगह रे रहिले होइनी हैला तांको भी कुआ से भी क्लास अटेंड करंतु सो ऑप्शन ठीक ठाक बसी हैला सो कुआ मते कोस्टल ओडिशा से टिके रिलेट करो कोस्टल ओडिशा से टिके रिलेट करो अरे हुए सेमिति त माने बुझी पारनो छोट पिलाडा ना कम एज रे अच्छा बुझी पारनो सेमिति हुए त माने यदि प्रिपेयर करूछो देखो प्रिपेयर करूछो एंड तमरा सीए माने सब प्रिपेयर करू नथुबे जॉब पे थिबे या फिर अलग कोन लाइक ब्रांच रे थिबे तो तांको भी कुहो से प्रिपेयर करिवे देखियो जल्दी त माने जॉब हे जिवो कारण माने एकाठी बसी डिस्कस करिवे ना अदर टॉपिक अपेक्षा पाठ पढा रिगार्डिंग बहुत डिस्कस करिवो हैला चलो ओह माय गॉड श्रिया रागी गला ए श्रिया को संदे कहनी श्रिया रागी जो बहुत जोरे राखियो जानना ताको चलो सो कोस्टल ओडिशा हैज अप्रोक्सीमेटली 5% of relative humidity during the monsoon अच्छा monsoon टाइम रे हमें रिलेट करबा केते को during the monsoon हमें रिलेट करछे ना मैम अप्रोक्सीमेटली दैट इज द 75% ओके 75% हमें ता persistently कहि परिबा persistently मराइन एयर कीप्स करूची केते रिया मजाक ता को मजाक रे नियो कोन यार एते सीरियस कोन ओके फाइन स्टेप को आज फुके किछि कहबेनी चलो सो दैट ऑन द कोस्टल एरिया हमें रिलेट करछ केते ना 75% सो कोस्टल ओडिसा रो रीजन कोन रहउची ना द कोस्टल बेल्ट ऑफ ओडिसा स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 480 km along the Bay of Bengal that covering the district like the Baleswar Bhadrak Kendrapara Jagatsinghpur एते कोस्टल एरिया ता सहित रिलेट कर दबो क्लियर then as a geography कोन आसुची ना part of the eastern coastal plain of India what it explains na ma'am that is formed by the Mahanadi delta and the smaller rivers like the Subarnarekha Baitarani Brahmani and the Rusikulya ta sath relate karibo again it is characterized by the sandy beaches dunes lagoons like Chilika Lake sath relate karibo jete estuaries अछि ta sath relate karibo ta explain करके टिके मने रखिबो हैला है ना श्रिया ता छोट पिलाडा ता कथा रे कोन सीरियस हेबि रे चलो so economy that is the agriculture what is agriculture ता साथ हम रिलेट करिबा ना paddy आसुची pulses आसुची coconut सहित आसुची exactly science सहित आसुची clear so fishing ports tourism ता साथ टिके रिलेट करतबो next एटा हला ओडिसा रा थिला then this is the coastal of the India total तार हमर कोन ना मैम that is
480 किलोमीटर दा थिला एटा हमर स्ट्रेच है कि केते ना मैम 570 yes 574 point something 0.8 I think point किलोमीटर को हमर एक्सपांड हो जाई छी एंड इंडिया जो हम देखिबा टोटल कोस्टल एरिया रो लेंथ केते रहउची ना मैम 7516 किलोमीटर टोटल एरिया लेंथ रहउची है ना चलो चलो नेक्स्ट को that is the inland Odisha has approximately what percentage of relative humidity during the monsoon period से रिलेट कलो अरे श्रिया सतरे रागी पड़ेलो ना कौन ना अच्छ ना रागी की रुसी की क्लास करूछ आंसर दबनी हाँ so inland Odisha has approximately what percentage of relative humidity during the monsoon that is 40% 50% 60% or 70% केते रहइबो कहलो केते रहइबो को मते ब्लैक कॉफी रो कमाल अमित कहि देलो कोथरा कमाल ब्लैक कॉफी और डार्क चॉकलेट रो कमाल तमाने भी खाओ तमाने पूरा एनर्जी आसी हैला आउ श्रिया हमर जदी टिके एड्रेस मते पठांदा ताले ता पय भी टिके पठै दियंती तार भी टिके मूड टिके ठंडा रहंदा टिके कूल हेई पिलाडा रहंदा हमर श्रिया पत्र पठै दे एड्रेस तेले लेखो एड्रेस पूरा बेल्जियम वाला चॉकलेट पठैबे बेल्जियम रा डार्क चॉकलेट ओनली फॉर श्रिया श्रिया ए श्रिया कुआडे गलो देखा दियो चलो चलो हो चलो सो को 40% हेले 40% 50% ना मैम दैट इज द 60% केते रहइबो ना मैम 60% बहुत गारे ही जाई जानि परिवानी 60% हैना क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को काहे गिर वे व्हाई ह्यूमिडिटी हैपेंस इन द मॉनसून टाइम रे क्वेश्चन तमने को माइंड रे बार-बार स्ट्राइक करथो मैम ए मॉनसून टाइम रे ही काहे कि आसे ह्यूमिडिटी हमरा मॉनसून टाइम रे अधिक आसे देखिबो ना ठीक आपण माने गुळगुळी जोटा गोटे हुए वर्षा हो नथुबो खरा माने खरा पाग नथुबो किबे वर्षा हो नथुबो ह्यूमिडिटी एते हाई होई कि तुबा इरिटेट लागुतो अरे आइदर खरा हो हम एसी लगेई बस रूम रे बसिबो न होले वर्षा हो ए गुळगुळी न हो सो ए गुळगुळी रा रीजन कोन व्हाई ए ह्यूमिडिटी काहे कि हुए अरे इट्स ओके सेटा श्रिया मो भीतर कथा तम माने एते व्यस्त कोइ so during the monsoon season especially in India and Odisha humidity rises because why now first kon hochi na warm air holds more moisture because in summers and early monsoon the land heats up kon hue na land jaldi amara garam ho jaye eta hue and guys kon hue na warm air expands and can hold the more water vapor जेतेबेले गरम हवा आसी जाए ना सेतेबेले से बहुत जल्दी हमर को बहुत टाइम तक वाटर वेपर को कैरी करके रखि पारे जोथि पाई कि कोन हुए ना हमर ह्यूमिडिटी आसी जाए रिलेटेबल चलो सो मॉइस्चर फ्रॉम द सी कोड होते ना बे ऑफ बंगाल रो आसे एंड अरेबियन सी रो आसे दैट winds from the ocean southwest monsoon winter ए सब को आसे तो रीजन कोन evaporation हुए देन हमर frequently rainfall and cloud आसे दैट्स द रीजंस ओके नेक्स्ट चलो so which natural calamities frequently affect Odisha during the rainy season mate rainy season कथा कहले टिके rainy season कथा कह during the rainy season हमें कहा तो रिलेट करि परिबा that is the earthquake rainy season सहित earthquake को केमिति करि परिबा कि no ma'am rainy season सहित कोन floods and landslide देखो landslide सहित रिलेट में be flood and landslide करि परिबा but cyclones and tornadoes को टिके मोर आपन को लागुनी कि साइक्लोन यस रंजन मु बुझी पारिस तम इमोशन बुझी पाछु जो माने बी मारुछ बट आपन मानको साइक्लोन एंड टोर्नाडोस टिके अधिक लागुनी कि काहे कि ना मैम साइक्लोन्स आम तो फ्रीक्वेंटली आसे दैट इज द मेजर बट ट्रूली हम कोन कोन करिबा ना टोर्नाडोस आर रेयर इन इंडिया बट द मतलब जदी एग्जाम वाइज देखिबा यूजुअली साइक्लोन सहित कोन ना टोर्नाडोस आसे से माने इक्वली आसंती बट इंडिया पई जदी अनुह किंतु आपण गोटी कोन बचारिबो अरे नेचुरल कैलामिटीज फ्रीक्वेंटली केबे आसे ओडिसा सहित सो ऑप्शन वाइज गले ना एंड आपण माने जदी एई आंसर को चूज करिवे ताले राइट आंसर मारिबे इंस्टेड ऑफ द फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड क्लियर कारण रेनी सीजन सहित आपण माने साइक्लोन को एंड साइक्लोन सहित यस ज्योति मामा आई टोटली अंडरस्टैंड योर कांसेप्ट बट साइक्लोन सहित टोर्नाडो बाय डिफॉल्ट थाए दैट्स व्हाई हमें साइक्लोन को चूज करिए बिकॉज़ ऑफ द रेनी सीजन एंड साइक्लोन सहित जे टोर्नाडो अछि ताकू चलाओ get one buy one get one okay so relatable very good so flood and landslide हमें कहि परिबा floods are frequent but landslides are
कौन कर परिबा दैट इज लोकलाइज्ड इन द घाट्स जेटा हम ईस्टर्न घाट रीजन आसिला एफिर जत्ते सब घाटी एरिया अछि सेही मानक सहित हम रिलेट करि परिबा बट जो रीजन में हमर घाटी नाही ता सहित हम रिलेट करि परिबानी राइट चलो नेक्स्ट तो नेचुरल कैलामिटीज को टाइप्स रो रहउची जेमति कि हमर कोन जियोलॉजिकल कैलामिटीज रहै जोटा कि अर्थ रिलेटेड कोन रहिबो hydrological calamities that is the water related rahibo then meteorological calamities that is weather and climate related rahibo then biological calamities kon kon rahi छै guys वो pdf देबी ताकू टिके थरोली पढ ओके चलो नेक्स्ट मते को हाई एनुअल रेनफॉल रीजन्स ऑफ ओडिशा इंक्लूड अच्छा मते कहिलो हाई एनुअल रेनफॉल कोन होची ना मैम हाई एनुअल रेनफॉल रीजन्स ऑफ ओडिशा include what that is the मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ और that is कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर that is गंजाम कोरापुट पुरी और that is खोर्धा नयगढ़ बोर्ड कहा सहित रिलेट करछि ऑब्वियसली मैम जते बेले एनुअल रेनफॉल कथा पळे आसिला आपण कोठी की मैम अधिक कहिले आपण माने केउझर सुंदरगढ़ मयूरभंज या सहित ऑप्शन सी को जीव नाही ऑप्शन सी को जीव नाही जते बेले पचाछि हाई एनुअल रेनफॉल मयूरभंज सहित जीव कोठी की ना मैम गंजाम कोरापुट पुरी यार तमानु कोन कहूची तमाने कोन करछ नॉर्दर्न प्लेट्यू सहित जीव कहा सहित ना मैम नॉर्दर्न ए इज राइट यस गायत्री आई नो ए इज राइट तो नॉर्दर्न प्लेट्यू सहित जीव दैट जोटी घाट अछि द घाट मार्जिन सहित रिलेट करिवो दैट गेट कोन ना मैम ओरोग्राफिक बूस्ट हमको मिले दैट्स व्हाई आई एम नॉर्दर्न प्लेट्यू सहित नॉर्दर्न प्लेन सहित कोन मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ याकू रीजन करी माने रिलेट करि परिबा आपण मानकर ऑप्शन कोन सी आसुची मैम आपण को ऑप्शन वाइज बा कोन अछि ना मैम गंजाम कोरापुट पुरी सो गंजाम कोरापुट पुरी आपण लागुदी मिक्स्ड बेला लाइक गंजाम कोरापुट हैव द डेफिशिएंट इन द पार्ट गंजाम को पटे कोरापुट को पटे ताका भीतर केते डिस्टेंस आसुची हमर कोन रिलेट करी कि पन्न पडा पाखा पाखी मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ माने सब पाखा पाखी अछंती तो तेमानकर क्लाइमेटिक रीजन गोटी हबो स्ट्रिक्ट हबो राइट बट डिफरेंट जते बेले आपनकर एरिया डिफर कर जाउछ ता तो माने रिलेट केमति करूछन क्लियर चलो तो व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल व्हाई इज एनुअल रेनफॉल इंपोर्टेंट तो एठी आपण मानकर किछ मेंशन अछि जेंति कि एनुअल रेनफॉल मींस द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन द पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग 1 ईयर ताको हम एनुअल रेनफॉल कहूचे मोreover it is measured in the millimeter that is केते कहूचे ना 100 रेनफॉल हैला 200 mm रेनफॉल हैला ताको हम मेजर केमिति कहूचे ताको हम मेजर केमिति करछे ना थ्रू दिस mm the meteorological department record daily monthly and yearly rainfall using the rain gauges the then calculate the whole year so imd रा आपण मानक बाकु मेसेज आसुथबो सब बेले देखुथबो कि आपनक अंचल रे बहुत जोर रे वर्षा हेबार संभावना अछि बट तांगर वर्डिंग्स टिके बहुत साहित्यिक थाए हम चंदन सर भलसे कहि परिबे बट मु कहू सेंति आपनकर imd रा मेसेज आस राइट सो नेक्स्ट मते गो सो व्हाई is annual rainfall important annual rainfall जदि न आसिला ताहाले हमर कोन ना एग्रीकल्चर आगु केमति जिवो गंजाम रे एते वर्षा जायथिले 2 लाख लोक दादन खटी गुजरात जायथि ओके सो एग्रीकल्चर से तो रिलेट करछु दैट इज डिटरमाइन क्रॉप पैटर्न पैडी नीड्स मोर रेन देन द व्हीट सो दैट हमें तो जानि छे पैडी हमें तो ओडिसा रे कोन फीड कल्टीवेशन मोर हुएनी मोर ओवर हमें कोन कहछे ना मैम पैडी कल्टीवेशन सो पैडी को तो बहुत पानी दरकार यदि पानी ही न था ताले हमें पैडी कल्टीवेशन लेते हाईएस्ट रैंक रे रहु न थांते क्लियर so water resources by obviously that is helps plants the irrigation dams and the drinking water supply then climate study by that is shows the weather and area is right yes to relate karibo that is disaster prediction obviously ta sahiत relate karibo next mate ko the areas with high annual rainfall in Odisha usually receive more than kete ruhe mate ko अलिसा बुझिले सको रिलेट करे रिलेट सतीश भाई को से मेसेज टाको पूरा छाडी देछ कॉपी पेस्ट कर देछ ना आगामी 3 घंटा मध्य रे आपनक अंचल रे प्रबल वर्षा होई पारे वाह ज्योति सो राइट आंसर कोन हबो यदि हमें एनुअल रेनफॉल कहउचे दैट इज मैम ऑब्वियसली 135 सेंटीमीटर को अधिक
ओके केते 135 सेंटीमीटर क्लियर नेक्स्ट so area with high annual rainfall in Odisha so in Odisha the average annual rainfall is about 150 mm but some places especially in the eastern Ghat and coastal belt get much more so high rainfall areas usually receive more than 1500 mm annually examples of amane Koraput Malkangiri Gajab Gajpati Kandhamar ko nei paribe Keonjhar and the parts of Mayurbhanj also often cross the mark of the hilly terrain also clear ता सहित जीव चलो नेक्स्ट डेली मेसेज आसुछ एकदम माने विरक्ति होता ब्लॉक कर दो ना मते जे एमिति डेली मेसेज करो वो ब्लॉक कर दे तुम माने ब्लॉक करो सिखो केमति ब्लॉक करो सो को सो द लो रेनफॉल रीजंस लाइक हमर केते ना मैम 135 सेंटीमीटर भी कम रहउची दैट इज मोस्टली लाइंग इन व्हिच पार्ट ऑफ ओडिशा यदि कम रहउची हमें कोन कहि परिबा को यदि कम रहउची ताको अपन माने रिलेट करि परिबा का सहित मते low rainfall regions 135 centimeter to कम रहिले हमें कौन कहि परिबा that is the south eastern कोन north west रो opposite करि दबो ऑप्शन डी नाही रे साउथ ईस्ट सहित टिके रिलेट करो साउथ ईस्ट सहित रिलेट करो that is the basin of कौन हमें कहउची क्वेश्चंस कोन अछि ना low rainfall regions approximately 135 सेंटीमीटर ରୁ कम ता माने पूरा कम एठी पचरिनी आपण माने 135 सेंटीमीटर ରୁ कम पचछि राइट ओके मैम साउथ ईस्ट अलिसा आई एमिति मते लागै तुम बाध्य है कि मो कथा हां मात्र बुझी कि हां करो ना ओके मैम 12 बुझिलानी बुझौछि ना गायत्री बुझौछि व्यस्त हुआ तो काहेंगे साउथ ईस्ट काहेंगे आपण माने कहथि वेस्टर्न ओडिसा नो जदि सबुटु कम पचरिबो ताहाले आपण माने वेस्टर्न ओडिसा को चूज करंते राइट हो बट एटी पर्टिकुलर कहि दे जेते आपण माने कोन कहिबी प्रीवियस क्वेश्चन आपण माने को उप्स सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन कोन कहली द एरिया विथ हाई एनुअल रेनफॉल दैट मींस ओडिसा रे हमरा हाई एनुअल रेनफॉल केते ना 135 सेंटीमीटर दैट इज द हाईएस्ट होची एटी हाईएस्ट टू कम पचरिची दैट मींस द लीस्ट पचरिनी गायत्री हाईएस्ट टू कम पचाची लिस्ट पचारनी जोगे सर को डाकिया पड़ियो से रीजनिंग में तमन को सॉल्व करिवे कोन आ तमन को कहिबी सो एटी कोन पचले ना लो रेनफॉल रीजन्स ऑफ ओडिशा सॉरी पढ़ले कि ओटा को यस द लो रेनफॉल रीजन्स 135 सेंटीमीटर और दैट टू कम मोस्ट लाइन इन व्हिच पार्ट दैट इज द साउथ ईस्टर्न क्लियर हां किरंजन मैम ओडिसा जीके पूरा बोरिंग ता सहित तीनटा हाथ ता माने कोन बुझिबी ता माने कोन बुझिबी कोन कहिया तमे जाउछ आई कैचिंग करिया पई किछि भी तम माने करो मति गति और ठिकाना नाही सो हमें कोन कहि परिबा ना मैम दैट इज द वंशधरा एंड ऋषिकुल्या एंड कहि परिबा द पार्ट ऑफ मिडिल बैतरणी record कौन छि रिलेटिवली लोअर टोटल ड्यू टू द लोकल रेनफॉल और रेन शैडो सहित हम रिलेट करि परिबा दैट इज कोडी ना साउथ ईस्टर्न सहित तस्ति पे हम ताको रिलेट करि परिबा हैला वेरी गुड सो नेक्स्ट मते कुआ सो लो रेनफॉल रीजन ऑफ ओडिशा लो रेनफॉल रीजन केते ना 135 सेम रु कम धीरे धीरे करके टोटल आपण माने कवर अप करि परिबे रीजंस कोथि पई देखो स्टार्टिंग आपण माने बलांगीर कलाहांडी वेस्टर्न पार्ट ऑफ नुआपड़ा बौद्ध एंड द पार्ट्स ऑफ सुंदरगढ़ झरसुगुड़ा ए जनरली नउसंती बट रीजन कोन होची ना दीस एरियाज लाई इन द रेन शैडो जोन ऑफ द ईस्टर्न घाट पई हम ताको रिलेट करू छी का सहित मैम ना मैम साउथ ईस्ट सहित रिलेट करू छी क्लियर चलो नेक्स्ट को the low rainfall regions of Odisha include the catchment basin का साथ रिलेट करू छे कुआ मते सतीश भाई रंजन कथा टिके बुझिला सतीश भाई अच्छा तो ठीक अछि तो कुआ लो rainfall regions of Odisha include the catchment basin of what that is the Budhabadanga and the Brahmani that is the Vansadhara and Rusikulia Subarnarekha and East the catchment area एबे ही आपण मानकु बुझैथिली catchment area guys एबे ही त मानकु बुझैथिली राइट कोन हबो ना मैम दैट इज द वंशधरा एंड ऋषिकुल्या पई हम रिलेट करू छे का सहित ना वंशधरा एंड ऋषिकुल्या पई मैम पिंकू सर का क्लास टाइमिंग केते मारे तृप्तिमयी पिंकू सर का फिक्स्ड क्लास टाइमिंग दीर्घ 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष हैला पिंकू सर को जो स्टूडेंट चिन्ह चंती सर का क्लास टाइम होची 8टा संध्या 8टा रे सर का क्लास टाइम 6 देखि दो छ थरे
आमर फेवराइट पिंक यू सांकर क्लास टाइम केते रहउची ना मैम दिस इज 8 PM इवनिंग 8 PM लिखिस बुझी पारछु त इवनिंग कोन क्लियर इज दैट क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट बात location of these rivers Bonsagara Rusikuleta origin the eastern part of Odisha that is from the Kalahandi Raigada side and flows into the Andhra Pradesh Rusikulya same Rusimala पर्वत सहित relate करिबो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट सहित relate करि परिबो so rainfall pattern in this region केमिति थाए ना मैम the south eastern coastal belt of Odisha that's why हमर गंजाम गजपति सहित relate करिबो then the comparison with the other basins कोन अछि याको thoroughly गोटे थरा रीड मारियो just गोटे थरा माइंड खर्च करिके टिके पढिबो क्लियर आप रे 12 PM वाईटी रे 8 PM हे ज्योति मामा कह देला ओके हां हमित कहूना which of the following district belong to low rainfall regions of Odisha so which of the following कारण कोन थोड़े फॉरेस्टर गेट ऑफ क्लास नेबे प्रभात डिमांड टिके बढ़ी जाउची कथा टिके हार्ड होची पानी में जाओ चलो so which of the following district belongs to low rainfall regions of Odisha एबे कुआ कहा सहित एबे low rainfall पचरी देला एबे western Odisha सहित यदि low rainfall कहिला ताहाले एबे Odisha सहित रिलेट सॉरी western Odisha सहित रिलेट करो that is for what ना मैम orographic region पाई हमें रिलेट करूछे that is the कोरापुट हैला and गंजाम हैला ए मानकु हमें रिलेट करि पारिबा ऑप्शन डी सहित कहीं जाऊ रे ओरोग्राफी सहित जाओ ना लोकल गंजाम सहित भी मु कहीं जाउची ना 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 ठीक अछि सॉरी फॉर दैट following district belong to low rainfall regions of Odisha sorry for that बलांगीर and कलाहांडी सहित ही जाओ बट इटा कंफ्यूज होउछ कि ना ना सॉरी फॉर दैट बलांगीर and कलाहांडी सहित जाओ कारण ऑप्शन देखो मयूरभंज and केउंझर अछि संबलपुर and सुंदरगढ़ अछि बलांगीर and कलाहांडी अछि बट एठी कौन पचारिछि ना लो रेनफॉल रीजन्स पचारिछि लोएस्ट पचारनी की लिस्ट पचारनी ऑप्शन टिके थरोली पढ़ी दियो सो दिस इज द ओरोग्राफी प्लस लोकल रेन शैडो इफेक्ट रे हमें जोटा क्रिएट होची द डेफिसिट क्रिएट होची कोथरे ने मैम हमर को ओरोग्राफी प्लस रेन शैडो पई जोटा हमर क्रिएट होची दैट इज द पार्ट्स ऑफ बोथ हमें कहि परिबा कोन ना मयूरभंज एंड केउंझर एंड संबलपुर एंड सुंदरगढ़ ओके ता सहित रिलेट करि परिबा बट स्टिल हमें रिलेट करिबा बलांगीर एंड कलाहांडी दैट इज आल्सो हैव द लो रेन पॉकेट्स बट की फोकस रे आसीबो कोन ना साउथ ईस्टर्न पेयर को अपन माने की फोकस रे नेबे सब बेले साउथ ईस्टर्न सहित की कनेक्ट करिवे तो ता सहित जाय के अपन माने कोन ना कोरापुट एंड गंजाम को ता पई जिवे कोठी की ना मैम कोरापुट एंड गंजाम को ही जिवे ये सौम्यरंजन ए ही हबो यस चलो तो है ब्लैंक Next point, the areas of low rainfall in Odisha are generally not directly affected by. So areas are not directly affected by कहलो कहा सहित छिबी की कथा देखो जण को चिड़ैली से पूरा क्लास छाड़ी के पळेला तमे काई बचछ कहा सहित छिबो तो the areas of low rainfall in Odisha are generally not directly affected by सहित हमें रिलेट करू छी कहा not directly affected by yes दिया मते that is the ना monsoon winds from the Bay of Bengal कोन पचारि छी ना Odisha areas sorry these areas of low rainfall sorry the areas of low rainfall in Odisha जो low rainfall means interior part को पड़ेला so interior part रे केबे monsoon of winds from Bay of Bengal affected हो नथिबो से माने तो drought द्वारा affected हेबे से माने thunderstorm द्वारा भी हेई परिबे even they can be लैंडस्लाइड भी नुह बट मोर ओवर हमें बे ऑफ बंगाल सहित वेस्टर्न ओडिशा को हमें रिलेट करूने ना मुन्ना लास्ट करूआ प्लीज लास्ट करो ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन मते को द विंटर सेशन इन ओडिशा एक्सटेंड्स फ्रॉम विंटर सेशन को ओडिशा रे में एक्सटेंड करू छै फ्रॉम हां मेरा मु ताली मारी भी से स्टैंड अप कॉमेडी देखी the winter session in Odisha extend केबे हुए ना मैम मिड अक्टोबर टू फेब्रुआरी पर्यंत से कोन ना मैम एक्सटेंड हे थाय मिड ए सितंबर जनवरी पुणी अंगर चलीला
yes that is the mid October to February जाए चलता है ना। मैम आपण हमको गाड़ी कले भी हमें क्लास छाड़ी के जीवनी निर्लज हो गलनी तमें गाड़ी कले भी जीवनी की कथा। चलो नेक्स्ट को the temperature in Odisha's coastal areas during winter generally ranges between मते coastal areas रे winter कहला coastal area सहित winter को टिके रिलेट कला coastal areas रे winter temperature generally केते थाए winter temperature तमाने जानि छ कम रे ही कहबो सब बेले कम रे कहबो बट आपण मान को एठी रेक्टिफाई मु करि देबी मु जानि छी कम रे ही तमाने कहबो यस जहा हो केई तो ठीक ठाक मारुसन देखो हमर सौम्य रंजन मुंड खटेइले आ मारी संती को मते गाली कले मु क्लास छाड़ी की चली जीवी मैम बाप रे ना ना जानछ ना नहीं दंड मुक्त अंचल बोली हां दंड मुक्त अंचल जानछ ना नहीं स्कूल माने करे माडा उठी जाई छी तो मु भी वेदांग क्लास रु गाली उठी देबी जहा करछो त माने कर त माने यदि जॉब न पाइबो चाकरी न करिवो त हमर लॉस हो थोड़ी ना हमर लॉस हो ना त माने करो जहा करछो पाठ न पढो बातरामी करो जहा इच्छा करो है ना चल तो को दैट इज obviously 25 degree to 18 degree Celsius केते रहबो ना मैम 25 degree Celsius to 18 degree Celsius रहबो because why ना coastal moderation keeps the water mild को करके रखियो that's importantly हमें कहि परिबा roughly high temps to the mid of 20 degree Celsius पर्यंत हमें ताको कोन ना कवर अप करि परिबा ठीक है हां चली बहुत चालाक तमे तो नेक्स्ट मते को next quote on interiors of Odisha during winter can drop to the interior of Odisha tell me the interiors of Odisha during winter can drop to 7 degree Celsius केते दारिंगबाड़ी मैम आमे सब चाकरी करले आपन का क्लास की करियो तमर सब सामने भाई भौणी माने सेना पुन कहबनी कि सेना पुन क्लास करनी आ तुम कोन चाकरी न पाई कि बुढ़ा बुढ़िया ले क्लास करथुवा की कथा है गुडा हां तो को दैट इज the interior means कंधमाल कोरापुट दारिंगबाड़ी से रिलेट कर दियो दारिंगबाड़ी से रिलेट कर दियो the deep of the single digit हमें कहि परिबा that is the 7 degree Celsius clear very good next the coldest district of Odisha are coldest district भाबरे हमें ओडिसा को कहा को डिस्ट्रिक्ट को लाइक कोन कंसीडर करसे कहलो दैट इज द ऑब्वियसली कोरापुट एंड कंधमाल को करछे कोथि पई ना मैम ये त हमर ईस्टर्न घाट हाईलैंड रिप्रेजेंट रहउची कोथि ना मैम ईस्टर्न घाट हाईलैंड रे एंड वैलीज ताकू ट्रैप करछि टोटल कोल्ड एयर को तो ईस्टर्न घाट रहउची वैलीज रहउची ताकू ट्रैप करके रखुची दैट्स व्हाई द रेगुलर कोल्ड वेव हमर आसी परुची एंड रिपोर्ट करि परुची कोथि ना मैम ओडिसा रे ठीक चलो नेक्स्ट मते का लोकली द ईयर इन ओडिशा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सीजन्स हमर ओडिसा रे सीजन को डिवाइड करा जाय छि केते टाइप रे मते कहिलो टोटल लोकली पचारै छि बहुत चालाक है कि ऑप्शन 3 मार नाही लोकली पचरा जाय छि पिट्टी भी धरि कि न हले जेपे न कहि छि सपोज अंदा आपण माने आपण मन मर्जी करिवे जेते टिके हिस दे देली गाइस लोकली कहि छि सेमति करनी ताहाले स्टुडियो फॉर्म yes that is 6 कोन ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत ताकू तो मन रख रे ताकू भी भूली कि सब पोड़ी खाइ देलनी नाही चलो तो हमें जानि छे द ट्रेडिशनली ओडिया कैलेंडर हिसाब रे हमर कोन ना हम 6 टा ऋतु थाए दैट इज कहि दि जंती ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत हैला एठी लोकली कहि छि हैला ऑप्शन सी से तो जा मन इच्छा चारि मारले मु हा मारिबिनी नेक्स्ट को द ओडिया सीजनल नेम वर्षा refers to which season obviously यार गाइस एटा तो आपण माने जानि थिबे कोन कहबी चलो हेमंत कहले टिके मते कहलो वर्षा टा को भारी खुशी रे रेनी सीजन मारतेला मते टिके कहलो हेमंत टा को कोन कहंती ओई पिला माने सब तो गूगल एडे दउना मैं जानछि को माने किछि मन रखनथिबो किछि मन रखथिबो मैं जानछि मैम आपण थ्रेटनिंग दउचंदी सर कोन पई आपण एमदी कहउचंदी आपण क्लास को आसिले पिला माने डरी जाउचन जानछन ना नहीं पिला माने द ग्रेट जोगेश सर इज हियर सो सांगु टिके वेलकम करा हम क्लास को सर टिके आसंदो टिके वार्म अप करंतो हम क्लास को राइट ए देखो कंफ्यूज हो जो तुम माने सो द ओडिया सीजनल नेम फॉर ऑटम दैट मिड अगस्त टू मिड अक्टूबर
मिड अगस्त टू मिड अक्टोबर सहित आम रिलेट करूछु कहलो राइट आंसर कौन हबो राइट आंसर कौन हबो यस मैम दैट इज मिड ऑटम टू अगस्त टी आम रिलेट करूछु दैट इज रिलेटेड टू द शरत जेटा हमर ओडिया रे शरत ऋतु आमे कहूचे कोन मैम ऑटम टू लाइक अक्टोबर से आमे कहूचे मिड ऑफ अक्टोबर दे शरत ऋतु आसुची क्लियर तो ग्रीष्म हेले तो समर को हेमंत हेले कोन कहूचे ना मैम ऑटम को हेमंत हेले हम का साथ रिलेट करिबा ना मैम ऑटम साथ रिलेट करिबा क्लियर चलो शिशिर हेले कोन कहूचे कहलो दैट इज द कोल्डेस्ट पार्ट नेक्स्ट मते को बसंत सीजन इन ओडिशा करेस्पॉन्ड्स टू व्हिच मंथ बसंत साथ रिलेट करो बसंत पंचमी साथ रिलेट करो बसंत मींस बसंत पंचमी साथ टिके रिलेट करो दैट इज द मिड ऑफ फेब्रुअरी कोन मिड ऑफ फेब्रुअरी टू मिड ऑफ अप्रैल साथ रिलेट करिबो क्लियर नेक्स्ट मते को मॉनसून रेनफॉल इन ओडिशा इज कंसीडर्ड हाई व्हेन इट इज अबव केते रहइबो ना मैम आपण मानु को केते कहि दिने 135 ऑन एंड एवरेज केते रहउची 135 रु कम ही रहउची 135 और ताठू कम रहउची सो ता सहित टिके ता पाखा पाखी टिके जाओ 135 ऊपर केते अछि 140 सीधा कहलानी 150 को आउट ऑप्शन नहीं लास्ट ऑप्शन को हम चूज करिवार अछि राइट 140 रे टिके ब्रेक मारो हैला मैम ओडिया सीजन नेम जानी नहीं जति सेति पई तो कहली लिखि पूरा ग्रीष्म ग्रीष्म देखो ओडिया रे लिखुची कोन ना मैम ग्रीष्म सेतरे पुनी लाइक एडा म हैला सेतरे पुनी हमर कोन चंदन सर राशि कहबी ये कोन एतरे सब भूलडाल करिच हर्षय देखो ठीक नहीं सेति पे हम लिखुनी बुझिलो मोय मोय हे जे मो सहित सेति पे तो को द लो मॉनसून रेनफॉल इन ओडिशा इज व्हेन इट इज लेस देन लो मॉनसून केबे रहउची कहलो द लो मॉनसून रेनफॉल इन ओडिशा इज when it is less than 120 centimeter 100 centimeter 80 centimeter or 135 centimeter low कहला माने कोन रिलेट करू सकू जेते बेले मैम हमें लो कहूचे दैट मींस 135 तो एवरेज हो गला 135 हमें रखुची पीक 135 रु कम होची ओडिशा बट जेते बेले अपन को लो कहूची दैट इज 120 केते 80 नहीं 120 the low monsoon rainfall कथा पचारी is less than 120 centimeter तो yes 120 centimeter often हमें कहि परिबा use as the lower कोन bracket in the state of classification clear very good चलो next मते को which basin is a part of low rainfall regions in Odisha को basin को हमें कहूचे is middle Basin basin बुढ़ा basin ऋषिकुल्य basin को basin ऊपर को जाओ टिके क्वेश्चन जहा कहूची लिखि के रखो सब इंपोर्टेंट दीटा क्लास रे तमरा क्लाइमेट ऑफ ओडिशा कवर अप हेसियो दीटा क्लास रे क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ ओडिशा कवर हेसियो आज क्लाइमेट हबो काली सॉइल हबो ओके चलो मते कुआ द बेसिन्स इन लो फॉल ये सब द व्हिच बेसिन इज अ पार्ट ऑफ लो रेनफॉल रीजन्स इन ओडिशा लो रेनफॉल सहित हमें को बेसिन को रिलेट करूछे को बेसिन को ऑब्वियसली निहारटा सब दिन नुआ की देखले त मते बोधे ओके सो कुआ द बेसिन्स इन लो रेनफॉल रीजन्स हमें कौन कहूचे ना मैम दैट इज द मिडिल बैतरणी बेसिन हां कि नै पिला माने ज्योति संघमित्रा भाग्यश्री वेरी गुड ऑप्शन सब भूलभाल मारी जालुच ऋषिकुल्य सहित केमिति त माने रिलेट कर दोछ मु तो मिडिल ऑफ बैतरणी कहली काहे कि ना मैम दिस इज आइडेंटिफाइड एज द कंपैरेटिवली ड्रायर सेगमेंट ता सहित हमें रिलेट करूचे आपण माने जो ऑप्शन डी मारुचंती ऋषिकुल्य सेटा तमे सॉरी कोडी साउथ ईस्टर्न बेसिन से रिलेट करछे दैट इज द पार्ट्स आर लो बट हमें कहि परिबा द मिडिल बैतरणी इज द कोन बेसी हमें कहि परिबा दैट इज द कीड चॉइस कोन दिस वन इज द कीड वन जेते बेला अपन एग्जाम कथा पचारिला हमें जानि छै कोन ऋषिकुल्य इज आल्सो द ड्रायर वन बट दिस इज द ड्राइएस्ट ता से रिलेट करि परिबो की हां 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 वंशधर पाख ऋषिकुल्य जेंति अनुगुल पाख ढेंकानाल ता से जाछ ना कि रे चलो सो व्हिच डिस्ट्रिक्ट्स रीजन्स come under high monsoon rainfall in Odisha high rainfall से तो कहना एसआई पाए स्पेशल बैच अछि कि मैम कविराज एसआई बैच परचेज करी की पाठ पढला रे टाइम तम पाखरे नै एसआई बैच परचेज करी की पाठ पढिया पई टाइम ही नै जति की फ्री क्लास मिल जता मान को दिस इज मोर देन एनफ एतिक रो कवर अप करो क्वेश्चंस न आसिले कहबो सीरियसली
कौन लिखुच चिन्मय तुमको जहाँ कहूँ किसी इंपोर्टाट तुम पचारुच ना टिके रही जा कारण बहुत पिला भितर मुझे सब इंपोर्टाट मेसेज पढ़ी पारुनी कोटा गोटे गोटे अनेला बेलू आखिरे पड़ जाऊँ ठीक अच्छे मैम ऑफलाइन क्लास रे मैम कौन छेची दौले आपण तो तुलन में आमको किन बड़ी ट्रीट कर अरे बा किन ट्रीटमेंट तो मान मिलूँ ना कि पाठशाठ पढ़ुना छेचा खाऊ पढ़ुल तो व्हिच डिस्ट्रिक्ट सहित टिके रिलेट कला डिस्ट्रिक्ट सहित आपण माने रिलेट करंतु व्हिच डिस्ट्रिक्ट ना मैम दैट इज द संबलपुर सुंदरगढ़ एंड फुलवानी डिस्ट्रिक्ट सहित रिलेट करूची क्लियर दैट इज द ओरोग्राफी कहूची प्लस ओरोग्राफी प्लस हमें कहि परिबा कोन ना मैम दैट इज द मोस्ट ओरोग्राफी एंड द मोस्ट करेंट यील्ड दैट कोन हमर जो सबस्टेंशियल मॉनसून अछि टोटल ऊपर ता सहित ओरोग्राफी सहित रिलेट करिवो संबलपुर एंड सुंदरगढ़ फुलवानी सहित नेक्स्ट मते कहिलो विंटर रेनफॉल इन ओडिशा इज मेनली हेल्पफुल फॉर विंटर रेनफॉल ओडिशा रे आसे दैट इज मेनली रेनफॉल कोथि पय हुए तो विंटर रेनफॉल इन ओडिशा इज मेनली हेल्पफुल फॉर काहे हमर विंटर आसे एंड विंटर आसिले हमर मेनली कोथि पय हेल्प हुए एटा दैट इज यस गाइस फॉर द Rabi crops. Na ma'am, Rabi crops. Clear? Very good. So that is the light winter showers, the improve of the soil moisture for the wheat cultivation, for the pulses and for the oil seed. Na ma'am, wheat, pulses and the oil seeds. So a manaka pai kon na Rabi fasal is very crucial. Clear? That's why relate kari pariba very good. So tea sahita tea is not a major part of the Odisha but so Assam sahita relate kari pariba. Sugar cane that is for the long duration by huए that is winter winter rain is marginal for that basi hamara summer sahita relatable. Then kharif that is the monsoon crop kharif sahita apna mane kona na ma'am this is the monsoon ବର୍ଷା ସହିତ को relate करी दबो. Next चलो तो क्या if winter rainfall is above 5 cm it is considered as यदि 5 सेंटीमीटर रु अधिक रहिले कोन ना मैं विंटर रे रेनफॉल मने रखो क्वेश्चन को टिके भलो से पढ़ा हां गायत्री कर दोछ तो को इफ विंटर रेनफॉल इज अबव 5 सेंटीमीटर इट इज कंसीडर्ड एज वेरी हाई मॉडरेट हाई और लो कहा से हमें कंसीडर करू छे 5 सेंटीमीटर रु अधिक कहिला रे 5 सेंटीमीटर रु अधिक कहिला ताहाले हमें कोन कंसीडर करू छे मॉडरेट है मॉडरेट कंसीडर करू छे आई एमिति होचरे ओडिसा रो विंटर हमर कंसीडर करूचे एज अ ड्राई ओडिसा रो विंटर को हमें ड्राई कंसीडर करूचे जोटा कि ऑलमोस्ट ऑलवेज 5 सेंटीमीटर टू कम ही थाए दैट इज द सिग्निफिकेंट यदि अधिक रहला दैट इज ऑलवेज व्हाट ना मैम दैट इज हाई नॉट वेरी हाई दैट इज ओनली हाई ओके हाई रहिबो कारण 5 सेंटीमीटर टू कम हम रखुचे ड्राई कंडीशन रहउचे ओडिसा नेक्स्ट चलो Next, which part of Odisha is noted for low winter rainfall? Low winter rainfall सहित हमें कहाँ को relate करूँचे ना low winter हेले कौन east west north south so south west को relate करीबा कहाँ को ना मैम south west ओडिशा कहाँ को south west ओडिशा कहाँ को relate करीबा चलो next which district suffers due to the single crop system for low winter rainfall गोटे मात्र single crop से माने cultivate करी परंदी कोथि पई ना मैम because of the low rainfall कोरापुट कंधमाल गंजाम एंड बलांगीर कहाँ से रिलेट करि परिबो मते को कहाँ से रिलेट करिवो ऑब्वियसली मैम कहाँ से ना में कोरापुट सहित रिलेट करिवा ऑप्शन समस्त ए सहित जाओ बी सहित जाओ नी रे बी सहित जाओ नी बी भी फेस करे बट हमें कहि परिबा द की पॉइंट रे हमरा कोरापुट आसीबो ऑप्शन में अपन मानकर कोरापुट अछि ताहाले कोरापुट जाओ कारण कोरापुट कंधमाल दीटा जाक तो करे किंतु कोरापुट सहित जाओ दैट विल बी द राइट आंसर बिकॉज़ व्हाई ना मॉइस्चर स्ट्रेस इज इन द रबी सीजन कॉज द मल्टी क्रॉपिंग इन द मेनी ब्लॉक्स दैट्स व्हाई हमें कहि परिबा कोन जे मल्टी क्रॉपिंग हमर हुई कोन ना मल्टी क्रॉपिंग को स्टॉप करूची कोन ना ए लेस रेनफॉल दैट्स व्हाई कोरापुट हमर को बहुत ही सिंगल कल्टीवेशन हे परछ ओके नेक्स्ट चलो कल्टीवेशन कथा कहिची क्वीन ऑफ नेचर कल्टीवेशन तो मते को अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन ओडिशा फॉल्स अंडर कोपेन्स क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग क्लास रे आपण मानन को कहि देथि क्लियर सो मते कोपेन्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओडिशा रे क्लाइमेटिक कंडीशन कोन रहिबो ऑलरेडी कहि देछि स्टिल त माने को दैट इज द ट्रॉपिकल रिलेटेबल
देखो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल नहीं, ट्रॉपिकल मॉनसून कौन ऑप्शन सब सी मारलानी ट्रॉपिकल साबन्ना एबे तो कहती ट्रॉपिकल मॉनसून फिर भूली गला हाँ monsoon yes that is the tropical कौन monsoon सहित जीव ओके ना 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 जदि AW मेंशन अछि सॉरी फॉर दैट जदि AW मेंशन अछि तार ट्रॉपिकल साबन्ना सहित जीव सॉरी फॉर दैट जदि ट्रॉपिकल साबन्ना मेंशन अछि एंड AW मेंशन अछि ताहाले आपण माने कोन फिट हबो लाइक ऑप्शन ए एम सहित हमें कहूचे दैट इज द विंटर ड्राई कंडीशन आसे विंटर रे जो ड्राई कंडीशन आसे ताको आपण माने AW सहित मेंशन करूछंती विंटर ड्राई कंडीशन सहित सो AW जदि मेंशन अछि ट्रॉपिकल साबन्ना सहित जा जदि ऑप्शन आपण माने कर ट्रॉपिकल साबन्ना आसेनी मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रॉपिकल साबन्ना आसेनी देन आपण माने ट्रॉपिकल मॉनसून सहित अछि क्लियर कंफ्यूज करूनी नुह मु AW देखि नथि सेथि लागि मु कंफ्यूज हे सॉरी फॉर चलो सो who described Odisha's climate as sub-humid with deficient winter rains कहा को हमें deficient winter rains भाबे रिलेट करूचे कफिन कोन थॉन्ट वेट और दैट इज एसपी चैटर्जी और स्टार्च कहा को हमें रिलेट करूचे कहिला कहा को रिलेट करूचे कोन पचारि छी ना describe Odisha as sub-humid tropical कहिला आपण माने कोन ना कफिन को सहित रिलेट करूथिले तो एठी कहा को रिलेट करबो ना मैम थॉन्ट विंड को सहित रिलेट करिवो कोन ना मैम थॉन्ट विंड को सहित हमें रिलेट करिवु ऑप्शन बी वेरी गुड अलीसा वेरी गुड देवदत्त मिश्रा वेरी गुड सुजीत यस यस एसपी चैटर्जी को सहित नाही यदि लैटर हमें कहि परिबा लेटेस्ट स्कीम अनुसार कोन करथिले ना कोपेन करथिले बट हमर जो थॉन्ट वेट कोन करथिले ना द मॉइस्चर इंडेक्स पुट करथिले ओडिसा रे मॉइस्चर इंडेक्स फास्ट पुट करथिले ओडिसा रे कोन किए करथिले ना द थॉन्ट वेट को सहित आपण माने सिपि दैट इज द मोस्ट सब ह्यूमिड विंटर ड्राई ए सब कांसेप्ट ओडिसा पई कि आनिथिले ना थॉन्ट वेट आनिथिले क्लियर वेरी गुड चलो एसपी चैटर्जी तो आपन कोन ना रीजनल क्लासिफिकेशन एसबी चैटर्जी को सहित आपण जिबे दैट इज रीजनल क्लासिफिकेशन आनिथिले नॉट दिस वर्डिंग सहित आपण माने जिबे देन स्टालर आपण कोन जियोमॉर्फोलॉजी स्टालर को सहित आपण माने जियोमॉर्फोलॉजी सहित जिबे ओके चलो स्पीड कर दूची चलो नेक्स्ट को एसपी चैटर्जी क्लासिफाइड ओडिसा कोस्टल रीजन अंडर व्हिच क्लाइमेट एसपी चैटर्जी को कथा आसिला एबे टिके रिलेट कर एसपी चैटर्जी को कथा आसिला से हमर कोन क्लाइमेटिक कंडीशन को करथिले दैट इज द ट्रॉपिकल साबन्ना कोन करथिले ना ओडिसा रा कोस्टल रीजन को कारण मोस्ट आपण जानछथि कोस्टल रीजन द्वारा अफेक्टेड होछि हमर ओडिसा सो ओडिसा रा कोस्टल रीजन को ट्रॉपिकल साबन्ना भाबे किए कैटेगराइज करथिले ना एसपी चैटर्जी करथिले क्लियर चलो नेक्स्ट माने तो how many agroclimatic zones are there in Odisha as per the forest and environment department केते agroclimatic zone अछि मते कोइनो agroclimatic zone केते अछि मते को Odisha as per the forest and environment department सहित very good guys मन रखियो कोन सब सी मारलनी 12 केबे रे 10 न कहि कि कोन 12 कलनी no that is 10 not 12 ढाबा मरज सब ढाबा मरज रे हाँ चिन्मय प्लीज टिके रह जा लास्ट रे कारण जदी को क्वेश्चन ऊपर को अछि बैक करि गेला तो फ्लो ब्रेक हेसबो लास्ट रहिले मैं डेफिनेटली तुम क्लियर आउट कर हैला तो चलो नेक्स्ट मते को तो टोटल हमें कहूचे दो हां 10 ही हबो यस इकोनॉमी क्लास आनिबा So, Sundargarh parts of Devgarh, Sambalpur, Jharsuguda falls under which agroclimatic zone? ये को agroclimatic zone आसी हो मत कहिलो ये को प्रभात प्लीज मेंटेन द डेकोरम हाँ तो को Sundargarh parts of Devgarh, Sambalpur, Jharsuguda falls under which agroclimatic zone? को agroclimatic zone रे आसुची मते को that is the कोन ना नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू कोन ना नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू सहित रिलेट करिवो नेक्स्ट मते को the climate of the north central plateau zone of Odisha is north central plateau सहित टिके रिलेट कलो north central plateau सहित रिलेट करो that is the hot and moist sub humid कोन northern side को देखिबा north and central कहिबा that is the hot इंटीरियर एरिया गला दैट इज द मोस्ट सब ह्यूमिड एरिया बोली हमें कहूचे काहेकि कारण हमर हॉट समर भी आसुची
monsoon moisture brings the sub-humid conditions over there. Clear? Next चलो. So which agroclimatic zone includes Baleshwar, Bhadrak and parts of Jajpur? So agroclimatic zone सहित हमें relate करूचे. एमिति questions आसीबार there is a high chances guys. So एई भली class आपण बिल्कुल miss करंतुनी otherwise हैरान हेसिबे. So right answer मते दियो. Which agroclimatic zone includes Baleshwar, Bhadrak and parts of Jajpur? Parts of Jajpur कहला, Bhadrak कहला, ता सहित हमें कोन ना obviously northern eastern कोन ना north eastern coastal plain ता सहित relate करिबा. Right, next को the Koraput and Navaranpur fall under which agroclimatic zone? Koraput and Navaranpur dita जाक हमर आसी गला को climatic zone सहित कहिलो. Koraput and Navaranpur आसीले आपण माने ईस्टर्न घाट हाईलैंड का सहित ना ईस्टर्न घाट हाईलैंड सहित रिलेट करि परिबा. मैम बहुत टफ क्वेश्चंस ना रे बहुत इजी क्वेश्चन बिकॉज़ तमे माने ना क्लाइमेट ओडिसा रा क्लाइमेट ऊपर एते ध्यान दोना एंड विश्वास करो अपकमिंग सीजनल एग्जामिनेशन आसुची ना तेरे ओडिसा जिको को पूरा घंटी गुंडी के तमाने में पकेइबो हैरान हे जिवो तम माने स्लोली की कहउचा फास्ट जाओ की कहउचा स्लो जाओ मु तमान को भीतर कंफ्यूज हे जाउछ रे. चलो नेक्स्ट मते कुआ. oops next to the soil of southeastern ghat Malkangiri that is a parts of Keonjhar is मते को Malkangiri रा soil ऊपर आसला climate सरी गला. So मते कुआ the soil of southeastern ghat that is the Malkangiri that is the part of Keonjhar also that is माने Malkangiri रा और part of Keonjhar रा soil को हमें consider करूचे that is what red black laterite alluvial soil saline and coastal कौन रहिबो. yes that is the third सतीश भाई तो obviously तमे कहिबो ना केनजर त अछि और राजपुर पाखो ना कि मैम एग्जाम रे हिस्ट्री पॉलिटी जीके पेपर जमा अटेंड करे नै भारी बढ़िया काम करलो जोतरे मार्क उठिबो सेला तमे कर नै बढ़िया 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 बढ़िया. चलो नेक्स्ट मते को alluvial plain delta alluvial soil सहित अपन कोन करिवे ना दैट इज द plain delta सहित कोस्टल एरिया ता पाखो एरिया माने कर अपन alluvial मिल जिवो. saline and coastal alluvial eta अपन coastal belt exactly coastal side रे अपन माने पाई परिबे that is the saline and coastal. clear? next 11:45 रे आ गोटे क्लास अछि कहार क्लास अछि 11:45 रे हैं. so मते को कलाहंडी and नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट ऑफ व्हिच एग्रोक्लाइमेटिक जोन एठी आसिला हेरी कहिला मते एग्रोक्लाइमेटिक जोन सहित रिलेट करूछ. सतीश भाई तमे कोन करूछ क्लास रे? सतीश भाई क्लास रे लाइक कमेंट सहित लाइक कंटेंट सहित टिके कमेंट को फोकस कर. तो को कलाहंडी एंड नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट्स आर पार्ट ऑफ व्हिच एग्रोक्लाइमेटिक जोन तमे देखुछ कोन सब चली छी फिर भी मु अपना फैला जाय जाउची प्लीज ना टिके देखो सतीश भाई. तो 41 नंबर मते को कलाहंडी एंड नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करा. कलाहंडी एंड नुआपड़ा दैट इज द कोना ना वेस्टर्न ऑन डुलेटिंग जोन ता से रिलेट काहे के में करूचे ना मैम दैट इज द रोलिंग अपलैंड करूचे दैट इज द ड्रॉट from region करूचे and that is the variable monsoon भी सेठी के आसुची that is not constant in the same year like whole year हमें कहदा ए year same monsoon same time में आछि next year भी same एमिति हुए. clear? चलो next मते को which agroclimatic zone includes Anupur, Dhenkanal and parts of Cuttack. एटा जदि त माने आंसर न देलो ए जदि त माने आंसर न देलो त माने को पूरा माडा बसियो को राइट आंसर दियो guys right answer टिके दियो. तो which agroclimatic zone includes Anupur, Dhenkanal and parts of Cuttack ता से टिके रिलेट कला. संतोष साहू को बुक अपन रेफर करू छ मैं बुक रो किसी रेफर करे नि मु मोर क्वेश्चंस निजे निजे ही बन. ओके मैम एबे टिके स्लो करंतु प्लीज औ कर दो जी स्लो एडा की कथा. चलो सो को which agroclimatic zone ए तो स्लो करिबे बस पॉज कर देबी फिर आंसर देला से. yes एटा जदी भूल भाल कलो ताल तमानकर आ त्राही नाही that is the mid central tableland कोन कहै ना मैम that is the mid central tableland because of what the transitional interior with the mixed soil and the moderate rainfall हमर हेठी होची that's why that कहै mid central tableland बोली कहै. clear? हां हां अछि कामाख्या नगर भी अछि. ओके चलो वेस्टर्न ऑन बुलेटिन कहला पर माने कोन जेनुअली साउथ वेस्ट को जिबे. ओके साउथ वेस्ट बेल्ट
नेक्स्ट को इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन्स रोटेट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे साइक्लोन रोटेट करे राइट बिकॉज ऑफ व्हाई माने को टाइप रे रोटेट करे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली केमिति हुए टे कहला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे केमिति हुए एंड काहे की हुए कोन सुनिचो कैरियोली हमर कोन कैरियोलिस डिफ्लेक्शन केबे सुनिचो कैरियोलिस डिफ्लेक्शन causes the cyclonic flow that is in the anti-clockwise कोन ना मैम anti-clockwise cyclonic flow हेई थाए that is north of the equator clear पॉलिश्री तमरा घुरिंग देन क्या करिंग कुहा मते yes so next mate kuha the most severe cyclone in Odisha occurred between most severe cyclone Odisha रे आसीथिला मने अछि तो 25 अक्टोबर केते डेट मैम 25 अक्टोबर 1999 मसीहा ता सहित जी अछि ता सांग को टाणी नबो क्लियर वेरी गुड चलो ये कोन 24 अक्टोबर रु 28 अक्टोबर मानलनी हैं मुन ठीक अछि चलो नेक्स्ट मते कुहा ओफ कोन हे गला yeah go so the Odisha super cyclone of 1919 was termed as Odisha रे कोन हितिला ना सुपर साइक्लोन आसीथिला तो से सुपर साइक्लोन ता हमर चेंज हो जाइथिला कोथरे मते कुआ Odisha रे सुपर साइक्लोन हमर चेंज हो जाइथिला आफ्टर that is a super cyclonic storm रे कोथरे ना बात्या रो महाबात्या हेई कि से ओटे storm रे कोथरे ना मैम सुपर साइक्लोनिक storm रे से कन्वर्ट हो जाइथिला क्लियर why हमें ताको कहउचे ना IMD कैटेगरी अकॉर्डिंग सुपर साइक्लोन स्टॉर्म केते हुए ना 222 किलोमीटर रु अधिक जदी हेला ताको हमें कहउचे लाइक 3 मिनिट जदी सस्टेन कला 220 किलोमीटर पर आवर रे पवन बोहिला एंड एटा 3 मिनिट रु अधिक जदी सस्टेन कला हमें ताको कहउचे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड महाबात्या हमर एई टाइप रो हेतिला सोनाल भाई मते ब्लॉक कर दीजो सोनाल पाखरे पावर नहीं तो ब्लॉक करबा पई ओके सो चलो सो ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट इज द नॉन आईएमडी टर्म ता सहित जाओ नाही नेक्स्ट मते को द साइक्लोन फनी हिट्स ओडिशा इन फ्यूचर फनी ओडिशा को केबे आस्थिला मते टिके कहिलो फनी ओडिशा को केबे आसीथिला मते को क्लास रे डरिबा जदी तमे माने का को ना हिरालाल भाई आसिले नहले सतीश भाई दी जण भाई को डरिबो ओके आ जदी सेमाने क्लास रे प्रेजेंट अछंती मस्ती मजाक करिया कथा स्वप्न रे भी भाबिबो नाही हां तो मते को द साइक्लोन फनी हिट ओडिशा इन फ्यूचर दैट इज इन 2019 एग्जैक्टली केबे ना मैम 2019 3rd of May 2019 एंड सेही बात्या पई मो बर्थडे से बस बर्बाद हो जाइतला ताको तो भूली ही बिनी लाइफ से सो 3rd of May 2019 एटा कोन ना फॉल हितिला नेक्स्ट चलो मते को साइक्लोन हुडहुड साइक्लोन हुडहुड अफेक्टेड ओडिशा इन हुडहुड केबे आसीथिला ओडिशा को केबे अफेक्ट करथिला मते कुआ पूरी कटक भुवनेश्वर और जगत सिंहपुर केंद्रापड़ा बहुत अफेक्ट करथिला मोस्टली पूरी करथिला आई नो हल्ला ना रे कॉलेज पले छुट्टी नथिला मैं भुवनेश्वर थिली हॉस्टल पानी फाटी सब बंद हो जाइतिला इवन गांव को जाई हो नथिला कारण बस भी चालू नथिला एंड एटीएम चालू नथिला पैसा उठे की बस रे देई की जिबा लागि कारण 3 दिन खंडे रहिलु सब तिक पैसा ही सरी गला विश्वास करो बाध्य है कि माने गांव को माने ढेंकानाल को बस दरे ब्लॉक थिला चालू नथिला या फिर को टाइमिंग रे थिबो कारण कॉल कनेक्ट होई पनथला नेटवर्क इश्यू पे नेटवर्क ही चालू नथिला हमें तो हॉस्टल रे पानी टंकी ऊपर चढ़ी कि मैं बहुत कष्ट रे कॉल करथली घर 3 दिन सस्टेन कलु देन पुणी हमें मो बेस्ट फ्रेंड रो मोर जेतु ढेंकानाल जाय पालुनी बाध्य है कि जाजपुर पळैथिलु कि हमें सेठी रही कि एटलीस्ट बस जाउथला पुणी बस कोथि जाउथला ना भद्रक बालेश्वर वाला बस चलुथला तो हमें पानी कोइल थे ओलेथिलु सेठु पुणी आसी कि मौसा हमको नेकी जाइथिले तो सिचुएशन माइंड बाहरे कि फालतू थिला से फनी तो हुडहुड केबे आस्थिला मते को ना 2014 केबे आस्थिला हुडहुड हमर केबे आस्थिला ना 2014 रे आसीथिला एंड हमें कहि परिबा मेजर लैंडफॉल कोठी हितिला ना आंध्रा रे हेतिला सतीश भाई आसिले रिवील हबो ओके चलो नेक्स्ट मते को हुई साइक्लोन स्टॉप ओडिशा इन मे 2020 सहित टिके रिलेट कला मे 2020 रे हमर साइक्लोन आसीथिला दैट इज
अम्फान कौन आसीथिला ना अम्फान आसीथिला एक्सट्रीम सिवियर हेतिला केबे ना ओवर द बे ऑफ बंगाल हेतिला मेजर लैंडफॉल ये वेस्ट बंगाल हेतिला ये कोठी हम वेस्ट बंगाल हेतिला हमर कोन प्रीवियसली ये कोठी हेतिला ना हुडहुड ये आंध्र प्रदेश से रिलेट करिवो ना चलो नेक्स्ट मते को द विंड स्पीड ऑफ साइक्लोन यस जोटा कि मे 2021 आसीथिला वाज अराउंड केते थिला तार पवन रो स्पीड केते थिला मते कहिलो हाँ दिव्यांशु नायक आमे जानिलु तो को विंड स्पीड ऑफ साइक्लोन यास यास रो केते थिला मते को 2020 क्वेश्चंस आपन को आइदर स्पीड को नहीं की साइक्लोन ना पछरिबो साइक्लोन को नहीं की स्पीड ना पछरिबो दैट इज 130 किलोमीटर पर आवर कोन ना आईएमडी रिपोर्ट अनुसार दैट इज द वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म थिला जोटा कि थिक अराउंड 120 टू 140 गले ताको हमें वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म पहुंचे क्लियर Next one, which cyclone had the highest recorded wind speed of 260 km per hour? Guys, 260 km per hour कहिदेला कोन सहित रिलेट करछ मते कहला 260 km per hour कहला that is the highest one अछि जोटा साइक्लोन एमिति नै कि सेटा ओडिसा रे थिबो ओडिसा रे ता पय अफेक्टेड होई कि हमर कोन वर्षा भी होइथिबो बट हाईएस्ट थिला फाइलिन नाही रे फाइलिन नाही that is अम्फान कौन थिला ना मैम 260 आसिले अम्फान सहित रिलेट करिवो जमा नाही फाइलिन बिल्कुल नाही हुडहुड तो 170 रु 185 जाइथिला फाइलिन हमर 200 215 भीतर थिला फाइलिन कथा कहउचे 200 215 भीतर थिला हुडहुड 175 रु 100 लाइक सही 80 85 भीतर ना 90 तळु थिला तो ता सहित रिलेट करिवो हैला ओके अरे वाह पिकाचू आज क्लास रे थिला ओके तो चलो नेक्स्ट ओ शिट सॉरी वाला नॉट डन एते जल्दी क्लास सॉरी बार नथिला मु भाबी थिले बारटा जाय जीवो चलो मन दुख हे गेला चिन्मय कौन क्वेश्चन थिला डाउट थिला किछि चिन्मय अच्छा क्लास रे पिकाचू ना लो सेमती जमा नाही मु तुमको चिन्हुची काहे एमदी भाबुछ पिल्लाडा माने तमे स्टडी आई करे थिला बेले भाबो 30 35 पिलांग भीतर मेसेज कर एठी एते पिलांग मेसेज भीतर केते तुम फुसकिना पळो जम जानि पारनी हां चिन्मय पचार डाउट पचारली का मैम मु आज आपन को टेलीग्राम चैनल रे मेसेज करी थी अपन देखछन कि टेलीग्राम ना गायत्री ऑनेस्टली देखिनी लाइक टेलीग्राम ओनली ओपन करे एक्सेशन को शेयर करबा लागि टेलीग्राम में तो कितने जण मेसेज करसंती मियानसी नायक देन नेहा ठाकुर किए तमे तम ना थ्रू कोन हम केमती जानिबे हां जगन्नाथ दत्ता दिव्यांशु बराल किए रे मु केमिति जानिबी पचारिल कि तमे क्वेश्चन पचारिल क्वेश्चन आसला रे मैम गोटे साइक्लोन आस्तिला 11 मे 98 रे मने अछि फोकस ऑन द क्लास सोनल चिन्मय मैम ओडिशा के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से जेमिति बलांगीर और सोनपुर को रेन शैडो जोन कोन पे रेन शैडो कोथि पे हुए जोठी रेन ता हमर फॉल होउची जदि तार ऑपोजिट हे गला शैडो में का को कोचे तार ऑपोजिट रे हमर शैडो ता सबले पड़े दैट मींस जो रीजन रे हमर रेनफॉल होउची तार ऑपोजिट होला दैट इज द रेन शैडो जोन दैट मींस एटी बहुत ही लोएस्ट रेनफॉल हुए चिन्मय यार ए भी गोटे क्वेश्चन क्लास टाइमिंग ममता कहार क्लास टाइमिंग ममता कहार क्लास टाइमिंग पचारुचो कहार क्लास टाइमिंग पचारुचो कहिले तो कहबी ना टोटल क्लास टाइमिंग पचारुचो YouTube रे क्लास टाइमिंग कहउचो कि दिस इज द क्लास टाइम ओके देखो 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाउची करंट अफेयर्स अपन मानन को पई ओके जिसको भी इंडिया जीके के नोट्स चाहिए मैसेज कर किछि भी पिला ओडिसा जी के पढुछन ना ओके हुआ सो 7 AM करंट अफेयर्स दैट इज द केडीएस
10 am रे आपनकर ओडिया एंड जीके अल्टरनेटिव डे रे होची चंदन सांकर देन 12 pm रे मैथ एंड रीजनिंग होची योगेश सांकर 1 pm रे कंप्यूटर विकी सर पढौचंदी 7 pm रे न्यू स्टार्ट होची कमिंग वीक माने कमिंग वीक नहीं और फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो टू स्टार्ट होची दैट इज द जनरल साइंस एंड जीके स्टैटिक जीके टा रहबे चंदन सर आपनकर नेबे एंड 7 पूर्व 6 रे आपन मानकर करंट अफेयर्स गुटे अपडेट क्लास नै के आसीबे केबी सर सेटा मेंशन करिने सेटा भी करि देबी सो 6 एंड 7 रे आपन मानकर क्लास रहइबो सो 8 pm रे इंग्लिश पिंकू सर नउचंती जीएस केडीएस सर एंड 10 pm तो जानचो द ग्रेट सुदीप्ता ना कोन निज को एते तारीफ करबे बुझि पाथो मैम चिन्मय मैम ओडिशा के कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी ज्यादा कौन रहते हैं जबकि वेस्टर्न ओडिशा में हीट ज्यादा होता है कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी क्यों ज्यादा रहता है चिन्मय कोस्टल एरियाज रे काहे के आसे कारण हमर कोन एयर एक्सचेंज हुए हमर कोन सी सरफेस टू लैंड सरफेस पर्यंत हमर एयर एक्सचेंज हुए जोति पाए कि कोन हुए ना सडन एयर टा कोल्ड एयर टा फुनी आसी कोन हुए ना हीट है कि कोल्ड हुए दैट्स व्हाई सेही भीतर हमर एटमॉस्फेयर जेति कि वाटर वेपर प्रेजेंट थिबो सेटा को फुनी कूल डाउन करिया पई टाइम लागे सो से जो कूलिंग रू फुनी हीट रू कूलिंग हुए से प्रोसेस भीतर हमर वाटर ड्रॉपलेट्स माने वाटर वेपर माने रहि जांती जेटा को टाइम लागे से माने कोन ठंडा हेबा लागे सो जेति की टाइम लागे ठंडा हेबा लागे जेति की टाइम लागे अधिक एक्सेस गरम हे गले कोन पूरा त हमर वाटर वेपर टा वेपराइजेशन हे जिवो राइट सो सेही टाइमिंग भीतर जेतु हुए तो जेतु पाखरे सी पाखरे रहउची तो हमर एक्सचेंज होची हमर हॉट एयर कोल्ड एयर एक्सचेंज होची दैट्स व्हाई दिस कोस्टल एरिया रे अधिक हुए आइदर डिफर माने इंटीरियर एयर को गले सेठी हमर कोन अधिक हुए आइदर हीट अधिक माने हमर कोन हीट अधिक हे जिवो नले कोल्ड अधिक हे जिवो ओके आउ किछि क्वेश्चन कार रही छी the total geographical area of Odisha extend over चैतन्य प्रधान मैम नयापल्ली नुआसाही गणेश पूजा देखि आसला अच्छा नयापल्ली रे गणेश पूजा भी होची एबे तमटो सुनी के जानिले मैम सतीश भाई चैट रे नथिले भी आपण तांको चैट पढी की कहउचंदी बट आम मेसेज रे 1 मिनिट पर रिप्लाई पाई मैम और हुई सतीश एवरीवन वांट्स टू नो सतीश भाई हमारो एडमिन अछंदी चैनल रे तो जो पिला माने डिस्टर्ब करंती क्लास को सो सतीश भाई के पाखरे एक्सेस अछि से तांको ब्लॉक करि पारे ही इज द पार्ट ऑफ वेदांग क्लासेस आल्सो ओके क्लियर मैम आपण विनर एसोसिएशन आसलेनी कोन पे विनर एसोसिएशन शहीद नगर अरे भाई टाइम तो होनी क्लास करिवा लगी क्लास रो कंटेंट काली गोटे दिन 4टा क्लास अछि तार कंटेंट बनेबा को एबे राती 2टा हबो सोइला बेले को आ सकाळ 3 माने राती 2टा रे जदी 2टा 3टा रे जने सोइबो से केते सकाळ उठिबो ऑब्वियसली उठिला रो मो 10टा क्लास वाला को केतेटा होची ऑफिस वाला को 11टा ऑफिस रु फेरला बेले को राती 9टा आसी कि लॉगिन कला बेले को आधा घंटे पळौची तो भाबो ता भीतर टाइम कोठी थ्योरी क्लास विनय बाबू थ्योरी क्लास पाई आपण मानको एप्लीकेशन क्लास पड़िबो बहुत जल्दी लाइक मोर एबे कमिंग वीक रु मंडे टू आपण मानकर एप्लीकेशन रे ओडिसा जीके स्टार्ट हो जाउची कंबाइन रहिबो सीजीएल बैच भी जॉइन करो जल्दी हमें स्टार्ट करबा ओडिसा जीके बोथ सीजीएल एंड पीओ बैच आरआई अमीन बैच रे आपनकर कब स्टार्ट हो जाउची ओके बहुत जल्दी होची तो जो माने जॉइन अच्छा ट्यून फॉर मंडे एंड जो माने हेई न हेबा को चाहू जे टेन जस्ट कर को ऑफिस माने 7 खंडे रामायण सरलानी अरे वेदांग क्लासेस रे तो ऑफिस अछि ना सेठी प्रेजेंट होया को पड़े ओके अल्लू अर्जुन के तुमको ब्लॉक करना ओके चलो आउ किछि क्वेश्चन नहीं तो क्लास ओवर कर देबी वाइंड अप थैंक यू अलीसा डिनर मु कर दे के इधर आसे एल्स मु डिनर धरि के जताए
क्लास सरला परे जदी इवनिंग रे किछि हेवी खाई देछि भोक नाही देन मो क्लास सरला परे खाए एमदी बहुत ही रेयर टाइम हुए क्लास सरला परे एल्स म 8टा बेलु खाइथि 8टा 9टा भितरे खाइथि हो थैंक यू जहा हो एते कथा भाबुचो दे क्लास रे टिके पाठ पढले कोन दे क्लास रे पाठ साठ पढुनो एटा मते दुख लागुची बाकी तमे जदी पढिबो सीरियस हे कि क्लास रे प्रेजेंट रहिबो पिला माने देन मते तो आहुरी इंस्पिरेशन मिलिबो कि तमाने को पय बढ़िया रे बढ़िया कंटेंट आनिया मु बाडी धरी कि रहिले पिला माने हसिबे किछि भी सीरियस हेबेनी चलो ओके ओके डेफिनेटली चेक करवा चलो बाकी जदि किछि भी अछि देन मते कमेंट सेक्शन में जणाई दबो किछि लाइक तमानकर अपडेटेड अछि किछि माने कंटेंट रे मिस्टेक अछि देन जणाई दबो काली क्लास में ताको रेक्टिफाई करके तमान पे निसे हला एंड आजिरो क्लास पीडीएफ पे ओरिड हबनी बिकॉज़ आजिरो क्लास 100 क्वेश्चंस थिला मोटे स्टॉप कली 50 क्वेश्चंस रे काली आ रेस्ट 50 सॉइल ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंटली रेड सॉइल एलुवियल सॉइल ब्लैक सॉइल ए सब सॉइल ऊपर टिके क्लास कला परे आपन को एट ए टाइम क्वेश्चंस दे माने पीडीएफ दे हला थैंक यू गाइस वन ट्रुथ फैक्ट अगर ओडिशा जीके एते केही कवर करू नथिले प्रीवियस को प्लेटफॉर्म रे थैंक यू गाइस बिकॉज़ ओडिशा जीके रो वेटेज एते अधिक आसिला ना त माने कवर अप न करले त माने ही हैरान हबो बिकॉज़ बहुत पिला ओवर कॉन्फिडेंटली आकु नै जानती बट गाइस हम कहिबी केबे भी कोनोसी जिंस को ओवर कॉन्फिडेंटली नियनी कोनोसी जिंस को अंडर कॉन्फिडेंटली भी नियनी हैला सब जिंस को ता वे रे पढिबा को दियो मु त मानु कहूनी तमे दिन राती मैथ रीजनिंग जिंदी प्रैक्टिस करू ओडिशा जीके को प्रैक्टिस करो बट एटलीस्ट क्लास रे प्रेजेंट रुओ एंड मोर इंपोर्टेंटली एग्जाम पूर्व 2x स्पीड थरे देखि दियो हैला हां कि विवेक एठी त मते फेमस कर देला जा हो किछि त गोटे भलो हैला वेदांग जॉइन करी कि ना कोन तम मान को जदे मो इंडिया जीके रा किछि क्वेश्चन पचारिबी माने तम माने कोन अनुकोण सबुछु जानिचो किंतु ओडिसा ऊपर तम मानकर कैच नै जस्ट बिकॉज़ कि तमे ताकू लाइक ओवर कॉन्फिडेंट हो जो ओडिसा विषय हमें कोन जानिनो एमदी कोन क्वेश्चन आसी ओडिसा विषय हम जोटा जानि परिबोनी राइट चल ना अननेसेसरी अटेंशन सीकर भी अछंती ना संप्रीत से मानन को भी अटेंशन देबा को पड़ी बट से मानन को मु सब बेले कुए रही जा लास्ट को ए जो लास्ट 10 मिनिट बकबक होजी एडा केवल तम मान जो मानकर क्वेरीज आसुची मो सामने आसुची तो सेटा क्लास टाइम रे मु सॉल्व कर दूची बट जो माने बैक क्वेश्चन सपोज को स्लाइड रे किछि क्वेश्चन आसी जिवो कंफ्यूजन डाउट आसी जिवो सेटा अपन माने लास्ट रे रहि जिवो लास्ट रे अपन मानकर जो माने अटेंशन दरकार लास्ट रे अटेंशन भी देबी किछि क्वेरीज अछि क्वेरीज को फर्स्ट सॉल्व हबो अटेंशन तो तम माने एंती रे नबो टाणी गोटा दिक नै जिवो हला चलो बहुत लेट हेलन गाइस थैंक यू सो मच हैव ए गुड नाइट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्रायोरिटाइज योर पेरेंट्स this should be your first priority no one else in the world thank you so much have a good day guys kali again dekha habo sakal 10 hela kali chandan sir ko class guys nahi sir ngoro tike काम अछि sir घरु को जिबे तो तांको टाइमिंग दा मु आपण मानकर ईवीएस kali कम माने स्टार्ट करछ क्लियर 10 टा रे 7:10 pm रे सॉरी 10 am रे आपण मानकर क्लास रहिबो वेदांग क्लासेस रे क्लियर ईवीएस ऊपर क्वेश्चंस आनिबी बहुत इंपोर्टेंटली जो ज्योग्राफी रे आपण मानकर कांसेप्ट लैक रहउची ईवीएस रे किछि किछि क्वेश्चंस आपण मानकर कवर थैंक यू सो मच हैव ए गुड नाइट टेक केयर बाय बाय